Hello everyone, and very good morning everyone. Welcome you all to Ada 24/7 Odia YouTube channel, and this is Satya Sir Pedagogy. समस्त वेलकम कर आडा ओडिया को गुड मॉर्निंग पिला समस्त भल अच्छे पिला समस्ते ठीक अच्छे रेडी गुड मॉर्निंग ओके तो आम मैंने SSB TGT पेडागोजी मॉक टेस्ट करुचे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 मॉक टेस्ट आई थिंक मॉक टेस्ट नंबर 4 तो थे आम टाइमर भी सहित भी प्रैक्टिस करुचे तुम आंसर दिंतु लास्ट को आप चेक करूँ आपंकर स्कोर केते हो ओके चलो आम स्टार्ट करवा सेशन आप आज गोटे छोट थर दे मो तरफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज नॉलेज रो ट्रेजर को बढ़ाया पावर ऑफ कंसंट्रेशन is the only key. You have to concentrate. Okay. तो समस्त रेडी अच्छे पिला सेशन गोटे लाइक एंड शेयर कर दिंतु देन विल स्टार्ट आवर मॉक टेस्ट रेडी पिला रेडी ठीक ठाक डन ओके तो आम आज डिस्कसन करिया आपनकर लास्ट होमवर्क रो आंसर जो माने भी देछन तांकर कमेंट्स भी मु शो करिवि ठीक अछि ता सहित आज मॉक टेस्ट आम करिबा एवं लास्ट को आपन मन पे होमवर्क मध्ये अछि होमवर्क आंसर कमेंट दवाई चेष्टा करेंगे आफ्टर द क्लास ओके चलो जन भी अच्छे 80-82 जन पिला समस्त सेशन को लाइक कर दिंतु देन विल स्टार्ट आवर कार्यक्रम रेडी पिला माने डन चल ये आप लास्ट होमवर्क क्वेश्चन इन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच हु प्राइमरली लर्न control the learning process teacher center approach teacher ही control करे the teacher who directs and leads the learning activities सहज क्वेश्चन था प्राय तो सब पिला माने आंसर देइछंती वो जो आंसर देइछन देखिबा रेणुका झरणा शुभंकर प्रज्ञा प्रियदर्शिनी मिनती रश्मिता रेणु मानिक दीप्ति अभिजीत मौसुमी नीलमाधव धनुप्रभा संगीता यूजर आइट मुझे ना जानी गीतांजलि मधुस्मिता बहुत सारा पिला आंसर दे आंसर दे बहुत बहुत धन्यवाद आई डोंट ना जानी पानी एटा बादल मधु देन कौन क्षणप्रभा श्रद्धा निवेदिता ना जानी एटा प्रीति प्रज्ञा आशीष विश्व सागरिका कृष्णा रश्मि समस्त पिला माने थैंक यू बहुत ढेर सारा धन्यवाद आंसर दे ओके तो आम स्टार्ट करें फास्ट क्वेश्चन आप आज क्वेश्चन स्क्रीन अच्छी आंसर दिंतु मुझे डिस्कसन करी क्वेश्चन पढ़ु ऑप्शन को भलसे पढ़ु टाइमर भीतर आंसर देवाई चेष्टा करूँ तरतर हवा दरकार नहीं टाइमर पढ़ो कौन अच्छे एक 1 मिनट ओके यस जन भी अच्छा सेसन में समस्त सेसन गोटे लाइक कर दिखाँ जो मैंने आंसर देते समस्त मो तरफ गोटे ट्रक भरा धन्यवाद आंसर देते जो मैंने कमेंट बॉक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ यूजिंग variety of teaching learning material and audiovisual aid in the education classroom में हम जो विभिन्न प्रकार TLM और AV aid जो यूज करूँ करिवार तारा की बेनिफिट बा की एडवांटेज कौन लिमिट द स्टूडेंट को लिमिट तो करेनी इट कैटर्स टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड एनहांस अंडरस्टैंडिंग विभिन्न प्रकार डिफरेंट लर्निंग स्टाइल पे अच्छा समस्त को आड्रेस करे आउ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए हाँ भल आंसर भल क्वेश्चन ये भी हम इट हिंडर लर्निंग प्रोसेस को हिंडर माने स्टॉप इट डज नॉट स्टॉप इट्स ओनली रिलेवेंट टू स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लाइक आर्ट एंड म्यूजिक केवल आर्ट और म्यूजिक दे पारे अन्य सब सब्जेक्ट दे पारे दे पारे ना तो काट बी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बी इज द राइट आंसर
गुड मॉर्निंग समस्त पिला माने व्हाई इज कंसीडरिंग द लर्नर्स कॉन्टेक्स्ट इंपोर्टेंट इन टीचिंग क्वेश्चन देछि क्वेश्चन पढ़ंतु ऑप्शन पढ़ंतु वेरी गुड प्रियंका अनन्या बहुत बढ़िया कृष्ण बहुत बढ़िया why is considering the learner's context is important in teaching learner context or learner situation को जानिबा टीचिंग रे काहे के गुरुत्वपूर्ण it allows teacher to impose rigid learning structure you cannot impose a rigid learning structure rigid टा कोनी नेगेटिव वर्ड इन pedagogy you have to impose a flexible learning situation rigid नुहे it helps to tailor instruction to meet the specific needs interest and experience of the learner जदि learner अनुसार पढौ जे हमें लर्नर नीड लर्नर इंटरेस्ट लर्नर एक्सपीरियंस को आम गुरुत्व देवा भल कथा इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द लर्निंग प्रोसेस इंपैक्ट पकाए ना कहीं इट्स ओनली एप्लीकेबल इन एडवांस एजुकेशन ओनली एडवांस एजुकेशन सिस्टम रे ना आंसर इज बी किछटा बी रा आंसर अछि स्टार्टिंग रो क्वेश्चन नंबर 3 प्रणाम प्रकाश गीतांजलि समरेश वेरी गुड पिंटू मिकी वेरी गुड प्रियंका बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 3 अपन स्क्रीन अपन टाइमर इज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन सेशन ग्रुप्स लर्निंग सेशन रे विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज करिवार फायदा कौन it leads to a monotonous and unengaging learning environment monotonous classroom monotonous माने boring नहीं it promotes active participation and collaboration and deeper understanding among learners हाँ group learning द्वारा active participation बढ़े collaboration बढ़े cooperation बढ़े understanding better हुए it limit the scope of learning no it enhance the scope of learning does not limit it is not effective नहीं it's only effective in small groups नहीं effective in everyone option B is the right answer तो जोले B उडा ऑप्शन रही जाउछि चलेगो चिका जारे B ऑप्शन उडा प्राय मैक्सिमम टाइम रही जाउछि सब जाक 25 टा जाक तो B हबनी क्वेश्चन नंबर 4 वेरी गुड प्रियंका स्वागतिका बहुत बढ़िया प्राय तो आपनकर सिलेबस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन उडा है जी टोटल सिलेबस आपनकर इंक्लूसिव अच्छी लर्नर कॉन्टेक्स्ट अच्छी TLM अच्छी ओके क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रिगार्डिंग लर्नर्स विथ डाइवर्स एबिलिटीज डिफरेंट एबिलिटी जो लर्नर माने आछंती तांको पई इंक्लूसिव एजुकेशन नो फंडामेंटल प्रिंसिपल कोन इट सेग्रीगेट स्टूडेंट्स दैट सेग्रीगेशन सेपरेशन आइसोलेशन ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन all these are negative word in inclusive education also all these are negative word in pedagogy तो ये तो नहीं होगा they provide a supportive inclusive learning environment that accommodates the needs of all students supportive environment inclusive learning environment दिया जाए जो ठी हमें सबु पिला मानकर नीड को फुलफिल करने पे चेष्टा करू भला कथा only focus on the academic achievement of the neglecting social and emotional well-being you cannot only focus on particular group of learners inclusive education में समस्त को फोकस करिवा you have to exclude the student with disabilities inclusive education word रे ही include अछि include the student with disabilities you cannot exclude them yes question number 5 स्क्रीन रे अपन मन पई Five. What is the primary purpose of formative assessment in education? Formative assessment ro primary purpose kono? To provide a final judgment on a student's overall performance. The final judgment would be summative. To monitor and provide feedback on a student progress during the teaching learning process. हाँ, during the teaching learning process हम पिलार progress को monitor करूँ. फीडबैक दो चालू थे ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस से जोड़ा हुए फॉर्मेटिव टू रैंक द स्टूडेंट समेटिव टू डिटरमाइन द रेडीनेस प्लेसमेंट आंसर बी हम
Question number 6. Which characteristics is associated with a student-centered approach? Which characteristics is associated with a student-centered approach to organizing learning? Formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment, continuous assessment. Which characteristics is associated with a student-centered approach to organizing learning? Student-centered approach learning organizer student-centered approach आ विधुर कोटा स्टूडेंट सेंटर कोड आम कह स्टूडेंट सेंटर आप समेटिव स्टूडेंट सेंटर आप फॉर्मेटिव आंसर ए हो समेटिव नु फॉर्मेटिव क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देजी व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स असेसमेंट एज लर्निंग व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स assessment as learning? It is B नुहे B हाँ 17 B assessment as learning कहले self assessment by peer assessment. It is focusing on evaluating the final outcome that the assessment of learning रहबो. It involves students actively monitoring and reflecting on their own learning process. निज learning process को निजे assess करिबा. As a learner I am assessing myself. As a learner I am assessing myself. That's why it is called as assessment as learning. Solely conducted by the teachers. By the teacher माने format summative. Primarily grading ये भी assessment of learning, ये भी of learning, ये भी of learning. A, C, D assessment of learning the characteristics. B is the characteristics of assessment as learning. Question number 8. In a constructivist perspective, how is subject-based learning typically approached? Constructivist perspective रे subject-based learning typically कौन approach करे? Thorough rote memorization of facts and information, negative. By providing strict guidelines and structured lesson, strict, negative. By engaging students in active exploration and construction of knowledge related to the subject, भलो कथा. By strictly adhering to predetermined curriculum, negative. Option C is better. Constructivism में student engagement और student active exploration, student active participation पर बेसी गुरुत्व दो. Yes, answer is C. Question number 9. Which of the following is an example of formative assessment tool? Through कोटा formative assessment tool लो कोटे example होते. A final exam at the end of the course, a summative. A pop-up quiz. Pop quiz to check the understanding after a lesson, that is also summative. ना हे पारे भलो कथा. B टा भलो हे पारे. Standardized test administered at the beginning of the school year. Test लिखाई छे. Test लिखाई छे. A comprehensive project due to at the end semester, ये भी summative हो. कोई टका में नहीं परियो, बी टका पर नहीं परियो. बाकी सब जड़ा समेटिव हो जो ए जो बिगिनिंग दा प्लेसमेंट हबो. ऑप्शन सी टा प्लेसमेंट हबो, ए टा समेटिव हबो, डी टा भी समेटिव हबो. बी कैन बी ए बेटर ऑप्शन. Question number 10. 10 for you. What is a key benefits of incorporating कर दो. What is a key benefit of incorporating self-assessment and peer assessment in the learning process? Learning process रे self-assessment, peer assessment को promote करिवार कारण कौन? It reduces the need for teacher involvement in the assessment process. It encourages students to take responsibility for their own learning and promotes reflection on their strengths and areas of improvement. It results in a competitive learning environment with limited collaboration. It exclusively focus on final outcome. Sir, final outcome माने एटा self assessment नुहे एटा आपनकर assessment of learning. Competitive learning तो नुहे. Self assessment, peer assessment लिखा है जे it encourages students to take responsibility for the own learning. निज learning responsibility निजे नियंती.
promotes reflection on their strength and weakness areas for improvement. निजर strength आउ को एरिया रे improvement करा जाय परबे एटा हो. Yes. Question number 11. What is the primary purpose of creating a test blueprint? ठीक अछि. What is the primary purpose of creating a test blueprint? Test blueprint create करिवार primary purpose कोन? To randomly select question from question bank, to ensure balanced presentation of content and skills, to set strict limits for each selection for the test, to determine the overall difficulty level of the test. Blueprint रे आमे सब बळे blueprint रे आमे content, skill, objective भितर balance रखो. Yes. Application, knowledge based question, understanding based question. Be the right answer. What is a key consideration when preparing the test items? Test item तैयारी कला बेले key consideration बा मुख्य area कौन? Making sure all questions are extremely challenging to test the limits of the subject knowledge. Ensuring that the questions are clear, concise and free from ambiguity, including personal opinions or bias in wording of questions, using complex language and jargon to assess the advanced comprehension. Complex language to use नहीं हमें question उड़ा सब clear होगा दरकार, concise होगा दरकार, संक्षिप्त होगा दरकार and free from ambiguity. Ambiguity माने confusion वाला question रहिबा नहीं जेमती. It should be clear question. We have answer. Which statement best describes a key difference between standardized test और teacher made test? Standardized test और teacher made test भितर key difference कौन है पारे? What is the key difference between standardized test and teacher made test? Standardized tests are created by individual teachers, while teacher made test follow strict national guidelines. Standardized tests are administered and scored in a consistent manner across all test takers, while teacher made tests may vary in administration and scoring method. Standardized tests focus mainly on subjective assessment, while teacher made tests are purely objective. Standardized tests are extremely used for formative assessment, while teacher made tests are high stake. Standardized test individual teacher बनाते नहीं, group expert बनाते. केवल सब्जेक्ट कहला होबनी. केवल फॉर्मेटिव पे तो स्टैंडर्डाइज यूज करा. स्टैंडर्डाइज मोस्टली समेटिव पे यूज करा जे. बी हैव ऑप्शन. स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन कंसिस्टेंट मैनर अक्रॉस ऑल द टेस्ट टेकर्स, व्हाइल टीचर मेड टेस्ट रो एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग मेथड वेरी करि पारे. मु ए क्लास टीचर आर क्लास टीचर करसन निज निज वे रे करन टीचर मेड टेस्ट बिकॉज़ एवरी टीचर हैज डिफरेंट एबिलिटी. यस कहवा what type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner in operant conditioning? What type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner? Learner रो प्रतिटी correct response को कोउथरे reinforcement schedule ले दिया जाए operant conditioning रे. Fixed interval, variable interval, fixed ratio, continuous. How we कदला बनी? How we कल किन जाओ? Yes, answer is option D, continuous. लिखा है What type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner? Learner प्रति थर ठीक कले हमें तो प्रति थर reinforcement दोचे. लर्नर प्रति ठीक प्रति थर आम रिइनफोर्समेंट दौचे. प्रति थर जमी आम रिइनफोर्समेंट दबा ताको आम कहबा कंटीन्यूअस रिइनफोर्समेंट. फॉर एवरी करेक्ट रेस्पॉन्स इफ यू आर रिइनफोर्सिंग द लर्नर दैट इज कंटीन्यूअस रिइनफोर्समेंट. यस वेरिएबल कले गैप थाए. आज देली कल देबेनी परदिन देबी, कल देली तापर दिन देबी. व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन रिइनफोर्समेंट दैट इज वेरिएबल. व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड गैप प्रति 2 दिन ने थरे देवी, प्रति 2 दिन ने थरे देवी दैट इज फिक्स्ड इंटरवल.
गैप फिक्स नहीं जिते इच्छा से देवी दैट इज वेरिएबल इंटरवल फिक्स रेशियो गोटे पिला दी थर फास्ट देवी गोटे पिला दी थर भल कले देवी पिलार परफॉर्मेंस अनुसार आप जो रेशियो फिक्स करते फिक्स रेशियो कह जाए गोटे पिला दी थर फास्ट देवी कि 3 थर फास्ट देवी कि 4 थर फास्ट देवी फास्ट थर देवी नहीं सी पढ़ो सेकेंड थर देवी नहीं पढ़ो आउ थे थर्ड थर देवी नहीं चतुर्थ थर जिते भल करे से दिहब ये पिलार परफॉर्मेंस को फिक्स करा जाए ये टाइम रो गैप फिक्स न थाए ये टाइम रो गैप फिक्स थाए ये सब दि जाए जो सब दि जाए से कंटिन्यूस जो टाइम रो गैप फिक्स थाए दैट इज फिक्स्ड इंटरवल टाइम रो गैप फिक्स न थाए वेरिएबल इंटरवल मुझे कही एव्री सेकेंड टेस्ट रे मुझे अवार्ड देवी फास्ट थर देवी सेकेंड थर देवी थर्ड थर देवी फोर्थ थर देवी टाइम गैप इज फिक्स्ड दैट इज फिक्स्ड इंटरवल मुझे अवार्ड देवी केतल देवी जानी बड़ देवी केतल देवी जानी बड़ देवी यस बुझिपाल कि केतल देवी जानी मैंने दैट इज वेरिएबल इंटरवल दैट इज वेरिएबल इंटरवल ब्लू प्रिंट क्वेश्चन एटा टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन ना दास a type of intelligence test in which the questions are similar in difficult level but more importance is given to the time element speed test power test verbal test performance test को प्रकार इंटेलिजेंस टेस्ट रे क्वेश्चन गुरा प्राय तो सिमिलर डिफिकल्ट लेवल लो थांती किंतु अधिक इंपोर्टेंस दिया जाए टाइम एलिमेंट को का दिया जाए टाइम एलिमेंट को टाइम को अधिक गुरुत्व दिया जाए को प्रकार इंटेलिजेंस टेस्ट स्पीड टेस्ट पावर टेस्ट वर्बल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट इज कॉल्ड एज स्पीड टेस्ट मैं लिखा है बेटी इंपोर्टेंस अधिक का दिया जाए टाइम को जो थे क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल को इंपोर्टेंस दिया जाए सेटा पावर टेस्ट जो थे पिलर ओरल एबिलिटी को गुरुत्व दिया जाए वर्बल टेस्ट जो थे स्किल को गुरुत्व दिया जाए सेटा परफॉर्मेंस टेस्ट स्किल एटा ओरल एबिलिटी एटा डिफिकल्ट लेवल एटा डिफिकल्ट लेवल जो टाइम को गुरुत्व दिया जाए सेटा होची स्पीड टेस्ट टाइम को जोटा गुरुत्व दिया जाए सेटा होची स्पीड टेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए आंसर ए क्वेश्चन नंबर 16 ओनली टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बढ़िया मिसिक रहियो सब तर आनिया केतबे क्वेश्चन नंबर 16 which of the following is not a subjective method of personality assessment जनकर पर्सनालिटी को जज करिवार आ भीतर कोडा गोटे सब्जेक्टिव मेथड नुहे इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन ऑटोबायोग्राफी वर्ड एसोसिएशन which of the following is not a subjective method not a subjective method answer is option B observation observation is objective sir interview रे 1-to-1 इंटरव्यू निया जाय पारे मु जने लोक डाकिबी ताको इंटरव्यू नेबी 1-to-1 हुए दैट इज ऑब्जेक्टिव सॉरी 1-to-1 दैट इज सब्जेक्टिव माने उल्टा कहली जो पर्सन टू तुम जनकर इंटरव्यू नेला तापर आउ जनकर नेला तापर आउ जनकर नेला तापर आउ जनकर नेला पर्सन टू पर्सन वेरी करिवो व्हेन पर्सन टू पर्सन वेरी करिवो अप्रोच दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी तो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव उल्टा कहूँ पर्सन टू पर्सन भैरी कले दैट इज सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अर्थ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बा व्यक्तिनिष्ठ ऑटोबायोग्राफी तो तुम ऑटोबायोग्राफी जाए तार कौन से कि वर्ड एसोसिएशन समस्त सामान न था ऑब्जर्वेशन ग्रुप करा जाए ऑब्जर्वेशन कैन बी डन इन ए ग्रुप यू कैन नॉट ऑब्जर्व इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन बी डन इन ए ग्रुप यस द आंसर बी हो ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड इट्स एन ऑब्जेक्टिव मेथड क्वेश्चन नंबर 17 Minal is average in intelligence, low in creativity, high level in adjustment. This is an example of dash. Inter-individual difference, intra-individual difference, observable difference, expected difference. Minal is average in intelligence, low in creativity, high in adjustment. गोटे लोक भितर जो परिवर्तन आसे सेल्फ डिफरेंस जोड़ा सेल्फ डिफरेंस मोर इंटेलिजेंस समान नुहे क्रिएटिविटी अलग एडजस्टमेंट कम विदिन ए पर्सन जो चेंज देखा जाए दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस दी जन भीतर जो चेंज देखा जाए दैट इज इंटर दी जन भीतर इंटर निज भीतर देखा दैट इज इंट्रा तो मिनाल
intelligence average, creativity low, adjustment high. That is called as intra individual difference. Intra, yes, differences within the person. Question number 18, which type of curriculum did Brunner suggest to follow for the cognitive development of children? Which type of curriculum did Brunner suggest to follow for the cognitive development of children? पिलार cognitive development को follow करिया पाई को प्रकार curriculum को Brunner suggest करथिले? Brunner inclusive curriculum, special curriculum, spiral curriculum, integrated curriculum. Brunner has suggested spiral curriculum. Spiral curriculum. See, generally मन कर क्लास 6th रे भी अलजेब्रा अछि, 8th रे भी अलजेब्रा अछि, 9th रे भी अलजेब्रा अछि, 10th रे भी अलजेब्रा अछि, 6th रे अलजेब्रा अछि जो उथरे 8th को सेत्र आउटे कांसेप्ट ऐड हेछि, 9th को आउ किछ कांसेप्ट ऐड हेछि, 10th को आउ किछ कांसेप्ट ऐड हेछि, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ी जाउछि. अलजेब्रा सेम टॉपिक अछि बट ता ऊपर नुआ कांसेप्ट ऐड हेइ चलछि, नुआ कांसेप्ट ऐड हेइ चलछि. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करिकुलम, that is called as spiral curriculum. That is, it was given by Brunner. A type of intelligence test in which difficult level of questions gradually increase and the time factor is secondary. The type of intelligence test in which the difficult level of questions gradually increases and the time factor is secondary. Time factor is secondary, difficult level ta primary. ताको वर्बल टेस्ट को जाए, पावर टेस्ट को जाए, स्पीड टेस्ट को जाए, परफॉर्मेंस टेस्ट को जाए. टाइम फैक्टर जो प्राइमरी एटा स्पीड टेस्ट, टाइम फैक्टर सेकेंडरी क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल प्राइमरी. भी कहली बा एटा पावर टेस्ट डिफिकल्ट लेवल को देखा जाए, स्पीड टेस्ट टाइम को देखा जाए, यस, परफॉर्मेंस टेस्ट स्किल को देखा जाए. ताला आंसर हो पावर टेस्ट. जो डिफिकल्ट लेवल पर गुरुत्व दिया जाए से पावर टेस्ट. Question number 20. A teaching learning strategy in which small group of students with a different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. That is multisensory learning, team teaching, cooperative learning, program learning. The teaching learning strategy in which a small group of students with a different level of ability, समझ का ability अलग अलग विभिन्न प्रकार लर्निंग एक्टिविटीज करती सेमान अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया पे. तो स्मॉल ग्रुप रे जो लर्निंग हुए ताको हमें कौन कहू? आइदर इज कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव ना. द आंसर इज कोऑपरेटिव लर्निंग. टीम टीचिंग नो, टीम टीचिंग तो ग्रुप ऑफ है ना, ग्रुप ऑफ टीचर्स टीचर्स ए कॉमन सब्जेक्ट ताको टीम टीचिंग बोली कहै छै, सेटा अलग. Yes, 20C. Question number 21. पढ़ो आंसर दिंतु. NTPC दूसरी. जब भी अच्छा सेशन समझ सेशन गोटे लाइक कर दे पारे एवरीबॉडी लाइक द सेशन. According to Piaget's cognitive developmental theory, the basic unit of cognitive structure that helps in implementation of cognitive behavior is termed as dash. Basic unit of cognitive structure को Piaget कौन कहते हैं? किमा कहते हैं? Very good. सहज क्वेश्चन ना. Question number 21 गला. तापर क्वेश्चन नंबर 22 on screen रे. Which one of the following is not a direct method of measurement of attitude? Attitude रो measurement रो कोटा direct method नुहे, सीधा सड़क मेथड नुहे पिलार attitude को measure करिवार. Interview, projection, questionnaire, observation. Which is not a direct method. कोटा direct method नुहे. Direct method projection. Interview one डाकियो बसे इंटरव्यू नबो सीधा सड़क जाई तुम ऑब्जर्व कर पारे जन को क्वेश्चन तो ताको पचारले कहबो. प्रोजेक्शन माने ताको गोटे सिचुएशन दबो, गोटे पिक्चर देखेबो, तार एक्सप्रेशन को जज करिवो.
पिक्चर देखेबो एक्सप्रेशन को जज करिवो एटा इनडायरेक्ट मु डायरेक्ट डाकली इंटरव्यू नेली डायरेक्ट सीधा सड़क मु सीधा सड़क तो ऑब्जर्व करछि सीधा सड़क तो क्वेश्चन पचारछि ऑल थ्री आर डायरेक्ट मेथड प्रोजेक्शन माने मु तो गोटे सिचुएशन देबी ए सिचुएशन तो आंसर दबु देला पर जे मु तो चेक करिवि इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन इज इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यस आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 गला एसएससी क्वेश्चन नंबर 23 आपण मानक पई स्क्रीन में a horse can be brought near water but cannot be forced to drink this statement reveals the truth of Thorndike's which law of learning घोड़ा को आखु आनल पानी पिया देल तथे से पानी पीला नहीं ताले थर्नडाइक कौ लॉ रेडीनेस एक्सरसाइज इफेक्ट मल्टी रेस्पॉन्स हॉर्स कैन ब्रॉट नियर वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक तुम जबरदस्त कर पार ना लर्नर इज नॉट रेडी यू कैन नॉट फोर्स देम यू कैन मोटिवेट देम एटा कौन तार लॉ ऑफ रेडीनेस यस आंसर इज ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडीनेस द राइट आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 24 which of the following is not a level of teaching कोटा टीचिंग रो लेवल नुहे बेसिक लेवल मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल which of the following is not a level of teaching टीचिंग रो कोड़ा लेवल नुहे बेसिक लेवल मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत बड़ा देवाशीष जन अच्छा सेशन में समझ लाइक कर दे पे एवरीबॉडी प्लीज मोनालिसा गुड गुड स्वागतिका टीचिंग रो तीन टा लेवल मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हैज बीन गिवन बाय हॉवर्ड स्पेंसर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हैज बीन गिवन बाय मॉरिसन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हैज बीन गिवन बाय हंट तीन टा लेवल ऑफ टीचिंग बेसिक लेवल ही नहीं यस आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 25 which of the following best describes an essential characteristics of organized learning रो सब essential characteristics कौन पर्सनल सोशल इंटेलेक्चुअल इमोशनल organized learning रो essential characteristics कौन पर्सनल सोशल इंटेलेक्चुअल इमोशनल which can be the ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग सब इंडिविजुअल अनुसार भ्यारी करे ऑर्गेनाइज लर्निंग रे सब इंडिविजुअल नीड एबिलिटी पर बेसी गुरुत्व दो सो ऑर्गेनाइज लर्निंग रे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉलो करा जाए को प्रिंसिपल फॉलो करा जाए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कौन कहूँ जो आप पिलार नीड पर्सनल नीड अनुसार पाठ पढ़ाऊँ तो ऑर्गेनाइज लर्निंग रे बेसी फोकस करे आपनकर पर्सनल लर्निंग पर्सनलाइज लर्निंग यस सोशल ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके एटा आपनकर गोटे क्वेश्चन एटा होमवर्क एटा को रखी देता स्क्रीनशॉट आंसर देबे ठीक अच्छे सेशन को समस्ते गोटे लाइक कर दे पे एवरीबॉडी जो अच्छा सेशन रे समझते गोटे लाइक कर दे गोटे किसी किसी क्वेश्चन इजी रही जाए मैक्सिमम क्वेश्चन इजी अच्छे मुझे चेष्टा करें कालठू आहरी मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन आने जो क्वेश्चन तुम शुण न चेष्टा करें हाई लेवल क्वेश्चन आने ओके आने नेक्स्ट कालठू आपको कहते पे तो आप्लाय चली आपंकर OSSC जो ARI कंबाइन बैच आप्लाय तो चली OSSC RI ARI ICT सुपरवाइजर SFS केते स्कोर है मत कह तो केते स्कोर रखले मत कह पांचटा रंग रो बुक पे अवेलेबल अच्छी आडा स्टोर अवेलेबल अच्छी ये ऑफिस रे अवेलेबल अच्छी तुमको Y594S कोड अप्लाई कले घर पड़ेगा एटा 361 पड़ुची 361 ऑफर अच्छी तोर आसनु 61 पड़ुची एतरे कंटेंट अच्छी MCQ भी अच्छी कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छी यस यू कैन परचेज द बुक ता सहित RI ARI अंगनवाड़ी सुपरवाइजर
एसएफएस रो कंबाइन बैच प्रिलिम एग्जाम रे हेला जून जुलाई हो प्रिलिम बैच 17 जनवरी स्टार्ट है नहीं पारे पे प्रिलिम बैच अप्लाई करेंगे कोड Y594 यस मैथ रे जो माने टिके वीक पे मैथ सर मैथ प्रो बैच यू कैन टेक दिस बैच ओके कोड Y594 अप्लाई करेंगे एटा हूँ पे ऑफलाइन रो मॉक टेस्ट पूरा प्रिंट हो जाइए ओएमआर भी जीव मॉक टेस्ट प्रिंट हो पूरा घरे बस निजे निजे नो पोर्टेबल सी ऑफलाइन एग्जाम करियो ना ऑफलाइन मॉक टेस्ट घरे बस आराम से परीक्षा दे पारे कैन परचेज दिस मॉक टेस्ट 100 केतरा गाने पड़ुछि 15टा मॉक टेस्ट अच्छे सो ओडिशा एसएसबी टीजीटी रो बैच चली पे 15 फेब्रुआरी रु जॉइन द बैच लास्ट गोटे एसएसबी टीजीटी को बुक अच्छी एसएसबी टीजीटी बही किसी ना फिल्म कही था 24/25 24 कृष्णा प्रकाश चित्रप्रज्ञान 22 चंद्रमणि 22 मोनालिसा महापात्र 21 वेरी गुड दीप्तिमयी 5टा रंग ठीक अच्छी संजू क्रिएटर ऑफिशियल 6टा रंग ओके so education is the best friend an educated person is respected everywhere education beats the beauty and the youth अब सुंदर न हो आंध्र हुआ मोटा हुआ पेटा हो पाठ जान ऑफिसर गोटे पढ़ी गवर्नमेंट चाकरी कर दे समझे पचारे बुझे तो यस बहुत मैटर करे एटा मन रखा दरकार एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड ओके तो समस्त पिला थैंक यू सेशन भल लगे लाइक करेंगे जो होमवर्कटा देली होमवर्क आंसर सेशन सरला बेले कमेंट रे जणेबे जो मैंने भी चैनल को गोटे सब्सक्राइब करूँ कमेंट कर जनातु क्लास भल लगुच खराब लगुच कौन लगुच यू शुड कमेंट ओके थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू नमस्कार जय जगन्नाथ देखा पे आसंता काली विथ मॉक टेस्ट 5 टिल देन निजर केयर रखु पाठ पढ़ु आगे चलतु ओके चलो।